Good evening, everyone. Welcome back to my channel, The Rahul Verse. Those who have newly joined, let me give you a brief introduction about my channel. This channel is basically dedicated to clarify your basic doubts, your foundations, to strengthen your foundations. Right now, in my last two videos, I have dealt with question based on middle term splitting. And as promised, I told you that I'll be dealing with three types of questions, and this is the third type. So here we are. And in near future, I'll be doing theorems based on triangles, circles, quadrilaterals, and my next video will be on trigonometry. I hopefully will be able to clear all your doubts on trigonometry. I'll be touching trigonometric ratios and trigonometric identities. All right. So this is the third type of quadratic equation that we are dealing with today. We'll be dealing with two questions today. As you can see, I have written both the questions here, so I'll be dealing with them one after the other. So let's start with the first one. X square plus 2 root 2 x minus 6 equals to 0. All right. I think you already know some of the rules that we are going to follow while solving these problems. Okay, तो शुरू करते हैं. तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि हमें स्क्वायर टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द स्क्वायर टर्म विद द कांस्टेंट टर्म considering the sign. If they have a negative sign, we have to consider that is minus 6. So let us multiply x square into minus 6 to obtain the product. So what do we have? We have minus 6x square, and this is your product. Then we are going to look for the middle term, that is 2 root 2x. 2 root 2x. एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं आप लोगों की तरह 9 और 10th में था, तो जब मैं ये 2 root 2 देखता था तो मुझे एक गाना याद आता था. आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू. आप सभी को ये पता तो नहीं होगा, एक मूवी थी शाहरुख खान की, बाजीगर. उसमें एक सॉन्ग था, ये काली काली आँखें. सो उसमें एक लाइन आता है, एक काली काली आँखें टू रूट टू, ये गोरे गोरे गाल टू रूट टू. तो मुझे लगता था कि वो जो रिदम है वो यहाँ मैथमेटिक्स से आया, टू रूट टू. एनीवेज, जोक्स अपार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा प्रोडक्ट हो गया माइनस 6x स्क्वायर और हमारा सम हो गया 2 root 2x. Okay. Now we have to find two such numbers such that the product is minus 6x square, and when we add them up we should get 2 root 2. Okay. यहाँ पर थोड़ा properties of radicals भी आ जाएगा. अगर आपने नंबर सिस्टम किया होगा, इरेशनल नंबर के साथ डील किया होगा, लाइक रेडिकल्स अनलाइक रेडिकल्स आपने देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा होगा देन प्लीज़ कमेंट में दे दीजिए. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट ऑल्सो. अभी फ़िलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट यू नो दैट. फाइन. अभी ये मान के चलते हैं कि आपको वो आता है. सो वी नीड टू सच नंबर्स अगेन whose product is minus 6x square and whose sum is 2 root 2x. ठीक है. तो मैं एक बार वो नंबर लिख देता हूँ एंड देन वी विल ट्राई टू वेरीफाई वेदर वो आप कन्विंस होते हो कि नहीं. मैं वो दो नंबर लिख देता हूँ पहले. अगर मैं चूज़ करूँ दो नंबर, देखिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 root 2x और दूसरा मैं ले लेता हूँ माइनस रूट 2x. ठीक है. 3 root 2x और माइनस रूट 2x. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि अगर हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स वी शुड गेट 6. ओके. सो हमारे पास 3 है, यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 लाइक टर्म्स, लाइक रेडिकल्स है. तो रूट 2 इंटू रूट 2 आपको पता होगा ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. एंड देयर इज़ अ माइनस साइन, सो विल प्लेस अ माइनस साइन अप फ्रंट. देन x इंटू एक्स स्क्वायर, सो द रिजल्टेंट विल बी माइनस 6x स्क्वायर. अच्छा, तो हमारा प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो गया, दैट इज़ माइनस 6x स्क्वायर. अभी देखते हैं हमारा सम आता है कि नहीं. ठीक है. सो फिर मैंने लिखा 3 root 2x, ऐड किया इसके साथ, एंड यहाँ पर माइनस रूट 2x है. सो दिस इम्प्लाइज, ये मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो माइनस रूट 2x, तो हमें क्या मिलेगा? इवेंचुअली हमें मिल जाएगा 2 root 2x जो कि पॉजिटिव है. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. हमें ये भी मिल गया कि
सम आपका 2√2x हो गया और आपका प्रोडक्ट -6x²। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो ये जो है आपका ये कैलकुलेशंस जो कॉन्सेप्ट है ये आप मेंटली कर सकते हो। आप एक बार प्रो हो गए तो आप लोग इसको मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सॉल्विंग पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ x²। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2√2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस फॉर्म में यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में। तो मैं क्या लिखने वाला, आई एम गोइंग टू राइट दिस वन एज प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। ऑलराइट, सो नाउ अगेन यहाँ पर 4 टर्म्स है, वी हैव 4 टर्म्स, वी आर गोइंग टू मेक 2 ग्रुप्स each with 2 terms inside. Okay, so this is the first group, this is the second group. Okay, so let's see, we have to find the highest common factor here. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कैच है क्योंकि मैंने पहले बोला कि ब्रैकेट इक्विवेलेंट होने चाहिए, जो भी ब्रैकेट आपको मिलेंगे वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू मेक देम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर √2 कॉमन है, यहाँ पर 6 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है बट एटलीस्ट कुछ कॉमन होना चाहिए। सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस ये 6 को मैं 2 into 3 लिखने वाला हूँ। ओके, यू ऑल कन्विंस? 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। ऑलराइट, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कुछ कॉमन मिले सेकेंड ग्रुप से, ठीक है। So what do we have? x² plus 3√2x minus √2x. Then I'm going to write. Okay, अभी आपने हम देखा कि हमने √2 into √2 को 2 माना था, है कि नहीं? तो क्या मैं इस 2 को √2 into √2 लिख सकता हूँ? Yes, obviously मैं लिख सकता हूँ, और into 3 equals to 0। अब देखिए ये सेकेंड ग्रुप में भी आपको √2 कॉमन दिख जाएगा। ऑलराइट, सो हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ईच ग्रुप से निकालेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप आई एम गोइंग टू टेक x आउट, ठीक है। सो इफ आई टेक x आउट आई एम लेफ्ट विथ x प्लस 3√2, ठीक है, फाइन। इन द सेकेंड ग्रुप वी कैन सी माइनस साइन इज कॉमन, सो आई विल टेक माइनस साइन आउट। यहाँ पर थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इट्स क्वाइट सेंसिटिव, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, लाइक maximum errors जो होते हैं, like it occurs here. Why? Because they take the minus sign out but they forget to change this sign which is inside. Once you take a minus sign common, the sign reverses, it changes to plus. Okay, obviously. So we'll take √2 out. So inside the bracket we have x, then this one changes to plus, then inside the bracket this √2 is already out of the bracket, so we're left with 3√2 equals to 0. Now we can clearly see that both the brackets are equal. Our job is done. Okay, now throughout this bracket is common, so we'll take this one out, then we are left with x minus √2 equals to 0. ठीक है, हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे either same format, either x plus 3√2 equals to 0 or x minus √2 equals to 0. ओके, अभी हम लोग पहले मैंने ये समझा दिया ये क्यों 0 होंगे, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। I'll just say the product of two numbers equal to 0. That means out of the two numbers, any one of them can be equal to 0 or both can be equal to 0. So we don't know which is equal to 0. So that's why we assume that both are equal to 0. So that's why we are using this statement, either this is equal to 0 or that is equal to 0. ठीक है? So now if I take x plus 3√2 equals to 0, this implies x will be equal to minus 3√2, ठीक है, पहला वाला हो गया। and if x minus √2 equals to 0, then this implies x equals to √2. This is the process of transposition, ठीक है। So at the end what do we get? At the end we get x equals to minus 3√2 and x is equal to √2. Alright, so I guess you understood the entire step. If you want to take a screenshot of this, you can take it out. Alright, so hopefully you understood this part. Okay, if you understood, then let's go for the last type of question, that is √3x², where we are dealing with two roots. Alright, this is going to be a piece of cake. So if you want to take a screenshot, I'm just placing it here, okay, for 5 seconds. 1 2 3, okay, the question is not visible. Okay, 1 2 3 4 and 5. Alright, thank you.
So now let's go for the next question, that is root 3 x square plus 10x plus 7 root 3. Okay, the same condition now. Let's start first by multiplying the square term with the constant term. So I'll just multiply here, that is root 3 x square into 7 root 3. Okay, we are multiplying this, fine. So what I'm going to do is I'm first going to take the rational number. यहाँ पर 7 rational number है, मैं वो word use कर रहा हूँ. 7 is a rational number, so I'm taking 7 out. I mean, because there is 1 here in front, so 1 into 7 times is 7. Next, like radicals, like irrational numbers, root 3 into root 3 will give us 3, and then we have x square. So we will get 21x square as the product. ठीक है, समझ में आ गया? Product हमें क्या मिला? 21x square. ठीक है. Next, we are going to look for the middle term. That is the middle term, that is our sum, that is 10x. ठीक है? 10x is our sum. Alright. Now we have to find two such numbers. We have to find two such numbers such that the product is 21x square and the sum is 10x. Okay, so you think, I'll give you 3 seconds for that. 1, 2, 3. Absolutely, I think you got the answer. So we have to find two such numbers whose product is 21x square and whose sum is 10x, and the number is 3x and 7x. Very good, because if we add 3x and 7x, we are going to get 10x, and if we are going to multiply 3x and 7x, we are going to get 21x. Okay? Alright, so let's go for it now. So next thing what we are going to do is we are going to split the middle term. So same format, so root 3x square लिख देते हैं, 10x की जगह पर हम लोग 3x plus 7x लिख देते हैं plus 7 root 3. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, प्रीवियसली हमने किया था कि कुछ कॉमन निकाला था, एक 3 को कन्वर्ट किया था या कुछ निकाला था. सो हियर ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन वन ऑफ द ग्रुप्स, राइट, एंड दैट ग्रुप विल बी द फर्स्ट वन. अभी ध्यान से देखिए मैं क्या चेंज करने वाला हूँ. सो वी हैव रूट 3x स्क्वायर. So this 3 here, if you can see this 3 here, this 3 can be written as root 3 into root 3. You all agree with this, I guess. So root 3 into root 3x, then we are going to write everything as it is, no change at all. That's the only thing we are going to change, alright. So next step, what we are going to do is we are going to take root 3 out because it's common in both the terms, and x. Okay, so we are left with x here, and then we are left with one of the root 3's. Okay, I think you are able to follow this one. Okay, in the second group we are left with I mean 7x plus 7 root 3. So it's very clear, 7 is common, so we are left with x plus root 3 equals to 0. Okay, now you can clearly see that we have x plus root 3 and x plus root 3 common, so we are absolutely correct. So throughout this expression we have x plus root 3 common. I'm going to take this out. Then we are left with root 3x plus 7 equals to 0. Alright, now again we are going to write the statement, either x plus root 3 equals to 0 or root 3x plus 7 equals to 0. Okay, we are going to write that. So if x plus root 3 equals to 0, this implies x equals to minus root 3. Okay. Now next, if root 3x plus 7 is equal to 0, this implies root 3x will be equal to minus 7. After transposition, the sign changes. Then we have x equals to minus 7 by root 3. Okay, 7 by root 3. And many students, they used to ask me, sir, after we get this kind of numbers, do we need to rationalize the denominator? Because they are taught like that. Yes, but in this case, you can leave it as it is. Okay, so therefore, देखो मैं आपके मन की बात भी समझ लेता हूँ. So at the therefore what we are going to write is x is equal to, पहले मिला था minus root 3 और and लिखते हैं यहाँ पर, and x equals to minus 7 by root 3. Alright, so just have a look here. If you want to take a screenshot, you can take it. I'm holding it still for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so go through this. It's very easy, and it's very much useful. It is effective because some of the question word problems needs quadratic factorizations. Alright,
And having said that, I'll be helping you more with theorems, trigonometric functions, ratios and identities, in triangles like basic proportionality theorem and all those. So if you need any help, please do write, and your wish will be fulfilled. All right, thank you very much. Have a great evening. Rahul Pradhan signing off. Thank you.